centers with us, and other there are total 13 at present centers. One more has been added. Pranath Pranami Institute of Management and Technology, Hisar and Haryana. We welcome them also. So remaining 5 centers will be connecting in the meantime, but I feel so it's already 9:40, so we will start with our session. This session will be taken by me. It is on green information technology for a sustainable future. So now I start with my session. During the session, I feel I wish to take you along with me, and so it will be in an interactive mode. So whenever I will ask for a response, so I hope I get your participation in return. And at the time, if one center starts responding, other are automatically requested to mute their mic. And if other center will also get the chance to be with us. And in the same way, I will mute my mic whenever needed. Okay, thank you very much. Welcome to this session on green information technology for a sustainable future. You also had a session e-governance yesterday by Dr. Manzoor Ahmed. So I firmly believe you must be aware basically of what green IT can be about. But since my research area is in this domain, I wish to bring forward a comprehensive view of green IT, green information technology, from my perspective also, adoption perspective. So can anybody from any center share what green IT is? Any center? Speaker on. We are getting you, sir. Any center? What green IT is? Okay. Okay. Pranath are with us. All centers are with us. Yes. Okay. Pranath Institute. Yes, sir. Can you share what green IT is? I think green IT is the way with which we use IT for the environment benefit purpose. Okay, IT for the environment benefit purpose, benefiting the environment. Okay, any other person? Any other center? Yeah, this is TPF from GPM Bala. Hi, sir. Could you get my voice? Hi, we are getting you. Yeah. Basically, when we are using what as a green IT, how we can just use the IT in an environment friendly way. Ultimate. That is what in brief is. Ultimate. Thank you. Any other person? Any other center? Any other center? Okay. So it's the procurement of resources. It is a procurement of resources. Okay. From taking into consideration the environmental cost benefit. Okay. Any other person? Okay. We start with an example of electric ironing press in our home. Can anybody share what is the power rating of an electronic or electric press that we use for ironing our clothes? Any person? Something between 500 to 1 kilowatt. Let us assume that it is 500 watt also, 1 kilowatt, and some electric presses have 1.5 or 2 kilowatt also, depending upon their characteristics and features embedded, steam ironing and other things. So let us assume as 1 kilowatt. I start every time with this pet example, 1 kilowatt. So how much time in a day we use it? How much time in a day we use it? On an average? 20 minutes to half an hour. Okay, let us consider to be half an hour. So half an hour, what is the power rating? It comes out to be 1 kilowatt, 1 unit for half an hour means 0.5 kilowatt in a day. How much days in a year we use it? In winters normally we say कि clothes को वैसे ही पहन लें,
but in summers we use it daily, I feel so. So how much on an average we should take? How much days in a year we use it? Approximate? Approximate 300 days, sir. Okay, 300. Or let us consider it to be 200 on an, say we are cost energy efficient, say. So 0.5 kilowatt into 200, it gives out to be 100 किलोवाट. सो जब भी हम घर में कभी होते हैं तो हमने ये देखा होता है कि हमारे जो दादाजी या बड़े पेरेंट्स होंगे वो हमें कहेंगे कि आप प्रेस को बंद करो, ज्यादा देर चलने ना दो, इट कंज्यूम्स एनर्जी, इट वेस्ट एनर्जी, बिल ज्यादा आएगा. ओके, कैन एनीबडी शेयर व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर? 170. All things, power rating of a desktop. 160 watt, sir. Okay, taking into other peripherals also into account. Okay, when we say power rating of a desktop, for a energy star rated computer it varies from 250 watt to 450 watt, but the assembled computers that we use, their power rating is 650 watts, normally 650 watts and above. And if it means if we use a desktop for 1 hour in a day, means 0.6 kilowatt we are using it. Okay, can anybody share how much time in a day we use a computer in our routine work? 3 to 4 hours. For 3 to 4 hours on average. 3 to 4 hours in a government setup. But if we see to our personal lives, 4 hours in office and 3-4 hours in home, this is a normal trend. And if we go to the banks, they are using it for 24/7 and 365 days. Okay, let us consider on an average to be considering our home use, or my if siblings are there, their use, let us consider it to be 10 hours. So it comes out to be 6.5 kilowatt in a day. And how much days in a year we use it? How much days in a year? Nowadays, every day. Every day it is 355, and on an average 300 days we do not give a leave to our computers. We play gamings, we do gamings, we do internet and other being connected with our friends and family members. It means let us consider 300 days, and I consider 6 kilowatt on a day. So it comes out to be 6 multiplied by 300 means 1800 kilowatt hour, means 1800 units in a year. And what was the power rating for a ironing of clothes? It was 100 kilowatt. And what is the power rating in case of a power electric consumption in case of a desktop computer? It is 1800 kilowatt, means 1800 units. So have anybody of us questioned ourselves or our relatives or our children that you are wasting energy, you are wasting money, or you are creating a pollution? I feel so none of us. So it is, I feel so 18 times that of a normal ironing press. So now from this 1800 units, if we multiply it by per unit rate of electricity, what is the per unit rate of electricity on an average in a state? UT में अलग है, आपका स्टेट में अलग होंगे, तो on an average आप बताएं क्या कंसीडर करें हम on an average rate of electricity? 5 rupees. Let us assume 5 rupees. So means approximately अगर 1800 to 2000 I consider, means 5 into 2 10,000. 2000 into 5, it is 10,000 rupees of electricity is being we are paying for the consumption of a desktop computer only. But if we come to another perspective, what is the major source of electricity production in India?
Major source of electricity production in India? Thermal. Thermal. It is normally 70%. If we multiply by 0.7 this 1800 units or any units you consume in your home, you will get that percentage of your units, that percentage of your uses that is coming from the thermal sources. And for thermal sources, we are getting the power from by burning coal. And when we burn coal, for each kg of coal burnt, there is certain cc of CO2 that is being added to the environment. So by going according to this method, we can calculate the CO2 also that we are going to add it to the environment. So this is the impact I wish to make from the energy efficiency or energy consumption pattern only. Now I start with the session. I come to the objective. The main thrust of this session is to bring forward a comprehensive view of our choices and decisions pertaining to ICT and related peripherals in relation to our natural environment. Okay, I request centers please mute your mic if there is on. Okay, the main thrust of this session is to bring forward a comprehensive view of our choices and decisions pertaining to ICT and related peripherals in our natural environment. Through this session, we will go through the following sequence. First, introduction to the theme we have covered. Then we will consider certain terminology specific to the green IT. Then we will attempt to define green IT. Then we will consider different perspectives of green IT. Then we would highlight the green IT potential and try to link it to the information technology product life cycle. Then we will attempt to view each phase of green IT product life cycle from a green lens. So, given the introduction to the theme, given the penetration of ICT peripherals in our homes and organization at an incredible pace, its negative impact on the environment cannot be avoided. तो जिस फेज पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और आईटी का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है हमारे घरों में, हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम इग्नोर नहीं कर सकते. इसमें दो पर्सपेक्टिव है. टू मेजर प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ आईटी इंक्लूड्स हाई एनर्जी कंजम्पशन फॉर आईटी, particularly if we consider the total life cycle of IT products and data centers power utilization. अभी तो मैंने एक घर के डेस्कटॉप कंप्यूटर की यूजेस की बात की है, तो अभी हम इसको पूरा लाइफ साइकिल देखें. जब कंप्यूटर बन के जहां से हमारे घर तक पहुंचता है, तो उस पूरे लाइफ साइकिल की बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत हाई है. सेकेंड वन इज द ई वेस्ट arising out when IT devices are discarded. Normally we say technology becomes obsolete. आज से 4-5 साल पहले सुनता था टेक्नोलॉजी बिकम्स obsolete every 2 or 3 years, बट अभी आज के सिनेरियो में ऐसे इट बिकम्स obsolete every 1 year, और हमें पता भी नहीं होता कि उस चीज को डिस्कार्ड नहीं करना तो भी हम उसको कर देते हैं. मे बी वो अभी यूजफुल है. तो अभी कल हमने बात की थी, एक मैंने रिसेंट इनॉग्रेशन में रिमार्क दिया था कि अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स की, अगर हम 80 करोड़ मोबाइल फोन्स का पाइल एक बनाए तो वो पाइल कितना बड़ा बनेगा और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे उसको कैसे हम डील करेंगे. बिकॉज अर्लियर द ई वेस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज यूज्ड टू इंपोर्ट एंड डंप ओवर हियर इन लैंडफिल साइट्स. वी यूज्ड टू गेट मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज, बट नाउ देयर हैज बीन रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. बट आई foresee we were taking the waste of other countries, but who will take e-waste generated by Indians? That I feel so a very big chunk of population in the whole world. Who will take our waste? Nobody will take. So it is a right time that we take these considerations into account and start working from right now on mitigating these impacts also. And there is a entrepreneurial opportunity that is embedded in it. So having said all these, there is positive side of IT also. IT at an advanced level can play a crucial role in promoting environment sustainability. तो जब हमने अनिल ओवरी जी से बात की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला में, तो उन्होंने हमें बताया कि आईटी को यूज करना है एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. तो इसमें दो चीजें हैं आईटी की. जब ग्रीन आईटी की बात करते हैं, दो पर्सपेक्टिव है. वन इज एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ आईटी, कि हमने आईटी इटसेल्फ का जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करना है. एंड सेकेंड वन इज एनर्जी कंजर्वेशन बाय आईटी.
एनर्जी कंजर्वेशन बाय आईटी मींस कि आईटी को यूज करके जो हमारी रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज हैं, रूटीन ऑपरेशंस हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उनका इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव है, वी हैव टू यूज आईटी टू रिड्यूस दैट. कैन एनीबॉडी एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ आईटी की तो हमने बात की कल. बहुत अच्छा आपको मंजूर जी ने बताया होगा वर्सोवर वर्चुअलाइजेशन एंड अदर टेक्निक्स, उसको मैं भी ब्रीफली आपको लिस्ट करूंगा. कैन एनीबॉडी give me an realistic example of energy conservation by IT? Any example you are practicing or you have observed in your routine life? Energy conservation by IT? Any center? Network printer. Network printer, very good. Yes, cooling of the printer is one. Okay, when we say network printing, it is energy conservation of IT, because using network printing we are reducing the load, electricity load to be put on printer. So example is right, but it is an energy conservation of IT. In energy conservation by IT, can you give it? Using IT to reduce the negative impact of other activities on environment. So using automation and mobile, we can switch on off our electrical devices whenever we do not need them. Okay. Let me remark. Please mute mic. Okay, thank you. I visited Spice Telecom in 2006 to 7. When one of my teacher, he joined as an engineer over there. When I visited that organization, telecom company, what I saw in Mohali, I visited the sir, and what I saw, they were monitoring the remote sites through their sitting in their room through their video conferencing equipment. So what they have said कि एक अगर साइट पे एक पर्सन को एम्प्लॉय करते तो दे वुड हैव गिवन हिम अ सैलरी, और उसके बाद इनको भी रेगुलर मूवमेंट पे चेकअप के लिए जाना पड़ता. बट सिटिंग इन देयर रूम यूजिंग आईटी, दे आर मॉनिटरिंग द रिमोट साइट्स. अगर उनको चेक करने डेली जाना है 20-30 किलोमीटर्स और उसको देखना है कि वो सिक्योर है कि नहीं, इट मींस दे हैव टू ट्रेवल, एंड ट्रेवल के लिए ही विल यूज अ कार or he will use a bike or a public transport. It means there will be a more need of public transport. It will be a more fuel we will be consuming, more CO2 harmful gases we are adding to the environment. One example is that. Another example in US and other countries, what they do, now we are using GPS system. हम भी कर रहे हैं, but where their GPS application of GPS is, for example, if there is a traffic congestion on one route, the GPS system will automatically suggest you alternative routes. For example, if there is going to be a traffic jam for 10 kilometers, say, in next your path, it will suggest you that there is going to be there is a traffic jam. So there is an alternate route you can follow, and it means if you do not stuck in a traffic jam, you will save environment. You will save your petrol, your money also. That will be consumed, because हम 1-2 मिनट जस्ट स्लो जब लेन्स पे मूव करते हैं, we do not turn off your vehicles. So it means the fuel is being consumed, CO2 is being added to the environment. So there is another example where IT is being used to consume to save energy of other operation. And third example, realistic example, ours and yours example. Today we are connected to this issue through ICT mode, through video conferencing. It means if so much participants at 13 centers, these number of participants have to come to NITER Chandigarh for get training. It means if I consider 20 participants on an average at a center, 13 into 20, it means it is around 260 something. And 260 people, if they would have come to NITER Chandigarh, it means either you would have used by air or by rail or by your car. You would have come. It means more need for these resources, and more need means more pollution to the environment. So in this way, we have been able to save many aspects of the environment and energy also. In this case, I say our core purpose is to train teachers. So it is not based on IT alone. It is not IT organization. We have to provide a banking operation, but our motive is to train teacher. But here, to do this routine activity, IT has been used. It means it is energy conservation by IT, using IT to
turn down the negative impacts of other routine operations on the environment. Okay, and there is another study by Ruth in 2009. He says that roughly 3% of the global electricity uses and about 2% of the total worldwide greenhouse gas emissions, according to Shah et al. In 2009, Zhang and Liu, is accounted to information and communication technology infrastructure. Means जो आपका 3% आपका ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी यूजेस एंड 2% जो पूरा वर्ल्ड का एमिशन है वो आईटी के कारण ही है. Therefore, it is the need of the hour to call for green information technology and green information systems, as with exponential increase in the adoption of ICT in developing countries, its impact on environment over the next 10-15 years will increase substantially. तो आगे जो 10-15 सालों में जो चाइना और इंडिया में इम्पैक्ट आएगा हमारा इम्पैक्ट आईटी का एनवायरनमेंट पे, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज द बायोस्फीयर कैरिंग कैपेसिटी फेस द थ्रेट ऑफ बीइंग ओवरबर्डन्ड बाय द ग्रोइंग रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, the continued depletion of natural resources and the rapid generation of non-biodegradable waste. Okay, यहाँ पे एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा. Can anybody share what was the time span when we had green revolution in India, and why and how we had the green revolution? Any sentence? That was related to farming that time. At that time, if we as per my limited knowledge, if I go back into the CBAC, so in 60s and 65s or 70s, India was suffering from the problem of hunger and starvation. We were not able to provide food to all the people. So scientists introduced the use of insecticide and pesticides, knowing that to optimize the output from the per unit area of land, cultivable output. So they were aware that उसका negative impact तो होगा, but वो certain percent पे रहेगा. But what happened? We, my grandparents and all our ancestors, they have used those insecticide and pesticides repeatedly over, I feel so, more than 50 years now. And that content, that level of those insecticide and pesticides in the water table has gone beyond a limit it should be. So that is the reason we are suffering from the problems like cancer. I interacted with one of the person. He was working with the UNDP, and earlier he worked as a medical resident medical something fellow at PGI Chandigarh also. So one of our participant, we went to his house to see his as a match for his sister, for the participant's sister. So I got a chance to interact with him. So he said, I am working on a special kind of treatment for cancer patients. So he said, I visited the state's concerned department regarding the status of cancer in Punjab. So he said, when I conducted a survey, and as per other reports, they say Bathinda in Punjab, this region, this belt is 10th in Asia. Having the patient suffering from cancer is 10th in number in whole Asia. So, but the government is not ready to admit that, because if the government admit, it means they have to come out with the counter strategies. They are questionable. So they are not ready to do that, and nor they are allowing these kind of people to come out with, try with these kind of therapies. तो अब उसका impact, अगर मैं PGI young scientist से मिला, तो उन्होंने मेरे को ये शेयर किया, आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ. उन्होंने कहा कि जब मैंने 2 साल पहले बात की थी, उससे 3-4 साल पहले अगर कोई चेकअप करवाने के लिए कैंसर आते थे 100 पेशेंट्स, आउट ऑफ 100 5 to 10 people used to detect positive for the cancer. But as on date today, 2 years back, out of 100 people, if they are coming with a doubt that they may be having cancer, they wish to get themselves checked up. Out of 100, 25 to 30 people are being detected positive for cancer. They are being detected with cancer. And in the same way, I got a chance to interact with serve one of the patient at my residential rental accommodation. I was sharing with one of my friend. He was my BTech friend, and when I came into Chandigarh, I shared a room accommodation with him. So he said, brother, मेरे गांव से एक अंकल आने हैं. Will you keep that uncle for certain days in your room?
and auntie in your room and you stay in lobby. Uncle का कैंसर का ट्रीटमेंट होना है in some hospital in Mohali. I said why not? अंकल को हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया, आंटी हमारे घर में रहे, तो एक हफ्ता 2 हफ्ते निकले तो दोस्त ने कहा कि अंकल की एक दवाई मेडिसिन रॉन्ग है, वी हैव गॉट अ रॉन्ग मेडिसिन, डॉक्टर से इट हैज टू बी रिप्लेस्ड, जो पहले प्रिस्क्राइब की थी इट हैज टू बी चेंज्ड, तो विल यू अकम्पनी दैट आंटी जी टू चेंज दैट मेडिसिन? आई सेड आई विल डू दैट. मैं आंटी जी को उस हॉस्पिटल में लेके गया. When I entered that hospital, in the pharmacy department, my friend's sister was working. I got that my friend's sister is working over there in that hospital. Another of my friend whose father suffered a brain hemorrhage at one point of time in life, and I was able to contribute little of my services towards them. In that case, I asked that sister, ये अंकल हमारे गांव से है, he is from our native place, village, so please ask the doctor to guide us correctly. तो उन्होंने कुछ मेडिसिन चेंज होनी है तो ये चेंज करके लानी है, तो नया सॉल्ट लिखा, तो उसने कहा कोई नहीं मैं डॉक्टर से पूछ के आती हूँ. डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा ये सॉल्ट आपने नया लेके आना है, ये कंफर्म्ड है कि यही लेके आना है. मैं उसको लेके, उसने कहा कि आप मतलब कि स्टेडियम के पास एक मेडिकॉज है, आप वहां चले जाओ. मैं वहां पे गया मेडिकॉज में, उनको मैंने 1 मिलीग्राम के 10 सॉल्ट्स रिटर्न किए, and each salt its cost was around 2700 के वापस हुए, 2700 के. जो नया सॉल्ट लिया उसका एमआरपी था 25 और 30,000 समथिंग, जो नए सॉल्ट थे 1 मिलीग्राम के 10 सॉल्ट. उसको उसने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर पे, उसने कहा यू पे एस 20,000. मेरे आई वाज एस्टोनिश्ड, जो रिटर्न कर रहा हूं चीज वो 2700 की वापस हो रही है, जो नई मिल रही है नई चीज रिप्लेस्ड वन वो मेरे को 20,000 की मिल रही है. इधर द डॉक्टर वाज मिसलीडिंग अर्लियर और ही इज मिसलीडिंग नाउ. आई इमीडिएटली कॉल्ड द सिस्टर, आई कॉल्ड दैट कि सिस्टर टेल मी वन थिंग, कि ये पहले मिसलीड कर रहे थे डॉक्टर्स या अब कर रहे हैं, कि जो सॉल्ट वापस कर रहा हूँ वो 2700 के हो रहे हैं, जो नए सॉल्ट मिल रहे हैं वो मेरे को 2500 के मिल रहे हैं, 25,000 के मिल रहे हैं, 20,000 वो मांग रहा है. तो शी सेड कि आप नाम भैया ये सॉल्ट का नाम बताओ, उससे वो कौन सा दे रहा है. मैंने बताया, कहते ये इतने का ही है, महंगा ही होता है, बट आप उससे नेगोशिएट करो, आप उसको बताओ कि मैं इस हॉस्पिटल से हूँ. तो उसने पूछा कि ये मेडिकॉस है, उसने नाम बताया मेरे को. I checked the name of that medicos, but it was not that medicos that she was telling, it was another. I dropped his phone, her phone. I negotiated with that owner, medical shop owner. I said that my sister is working in pharmacy department in that hospital. She says this salt is not worth 25,000 rupees. You are overcharging me. She says it is a cheap. I reversed it. She said it was costly. I said to the medical shop it is cheap. She said she is making a fool of you. So what medical shop person did? He again took the calculator. He calculated. He said to me, okay, you pay 15,000. 15,000. Immediately he reduced 5,000. Means MRP 25 to 30,000. That medicine I am getting for 15,000. And auntie was happy. Amar has helped me. You have saved over 5,000 rupees of money more. But I was not happy. I was not happy at all. Why? Because that 15,000 rupees medicine was only for 3 days or 1 week. It was only for 1 week. 1 week. And bedding charges of that hospital was approximate 5,000 per day. 5,000 per day. मीन्स मेडिसिन का अगर निकालूं 20,000, अगर नॉर्मल पर्सन जाएगा 20 से कम नहीं मांगेंगे वो. 20,000 मीन्स आपका एक हफ्ते का खर्चा है, तो एक महीने का 4 वीक्स का 4 वीक्स का 80,000 रुपीज खर्चा है. एंड बेडिंग के अलग. इट मीन्स इट ट्रीटमेंट फॉर अ कैंसर विल गो इनटू सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज, जो कि हमारी मंथली सैलरी से भी ऊपर जाएगा. तो मैंने फिर अंकल को मिला, अंकल बहुत फिजिकली फिट है, पजामा कुर्ता में थे, व्हाइट सूट. तो आई आस्क्ड हिम, अंकल व्हाट यू डिड इन योर लाइफ कि यू सफर्ड फ्रॉम अ कैंसर. मेरे को तो आप लगता ही नहीं आपको हो सकता है, कि उनको खांसी के टाइम पे ब्लड निकलता है. तो ही सेड कि अमर, व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय फार्म्स, तो आई यूज्ड टू ओपन द बॉटल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स विद माउथ. मैं कहता था हम वी आर जट, हमें क्या होना है, हम खोल के डाल देते थे स्प्रे के लिए, बट मिक्स कर देते थे. बट pesticide and insecticide will not see what caste, color, creed and to which area you belong. They will do their work. So in the same way, this is because the people in other states or in the outer
areas, UT administration may provide a filtered drinkable water to their citizens in residents in Chandigarh. But all the taxes we pay in states, in different areas, these are not being spent equally back to those areas. So if we are using insecticides, pesticides repeatedly over the years and water table is being getting polluted, it means जो कैंसर की सिचुएशन अभी तो सिर्फ रूरल एरियाज पे मिल रही थी, आने वाले टाइम में जब हमारा ई वेस्ट रोडों के कोनों में होगा, हमारे एरियाज की गली नुक्कड़ पे आप फेंकेंगे, उसमें लेड है, कैडमियम है, ब्रोमीन है, आपके जब वो आपका रेन होगा और वो वाटर टेबल में मिक्स होगा, देयर इज नो बॉडी हु कैन सेव अस फ्रॉम दिस नेचुरल दिस in unavoidable disease. And I predict if this situation continues, within next 20 to 30 years we will be having one cancer patient in all of our homes. So this is an alarming time. We have to analyze our efforts, our operations, our activities. We have to put a check on it at this moment only, because even if we are educated, we are PhDs, we are MBAs, we are masters, we are technical holders, we are not incorporating these practices into our routine activities. If we are not doing, our brothers and sisters in outer areas who are in villages, who are not having access to this kind of education, they will not be able to follow this, realize the negative impact they are going to face in the tomorrow's world. So in a nutshell, we can say that to deal with the environmental problems, we are called upon to innovatively use IT and make IT systems and work practices greener. हमें IT को अच्छे से यूज करना है और जितने भी IT systems हैं, हमारी daily work practices है, हमें उनको green करना है. So now we come to terminology. There are several important terms along with terms in the context of green technology based theme. So मैं यहाँ पे कुछ terms की यहाँ पे review लेंगे, फटाफट definition को discuss करेंगे, so that any researcher who wish to work in this area have a pre-knowledge, pre-information about this area. Green, it refers to our products or properties, physical attributes in context of eco-friendliness and our energy efficiency और कार्बन फुटप्रिंट. जब हम ग्रीन की बात करते हैं तो ये किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रॉपर्टी की फिजिकल एट्रीब्यूट की बात करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ इको फ्रेंडलीनेस, हाउ इको फ्रेंडली इट इज टू द एनवायरमेंट, हाउ एनर्जी एफिशिएंट दैट प्रोडक्ट इज. एंड यहाँ पे एक बात हुई है कार्बन फुटप्रिंट की. कैन एनीबॉडी शेयर फ्रॉम एनी सेंटर व्हाट कार्बन फुटप्रिंट इज एंड व्हाट कार्बन ट्रेडिंग इज? कैन एनीबॉडी शेयर? What is carbon footprint? The amount of carbon. Like there was a Kyoto treaty under which whosoever makes some greenhouse gases, creates some pollutions and all, he has to take up buy the credits from the different countries, so that whatever the pollution he creates, the greenhouse gases he creates, that has to be compensated by buying a carbon credits from the other countries which have certain carbon credits in their balance to sell them to the countries who are creating the greenhouse gases. Greenhouse gases. That is the concept of the carbon credit. You create a okay. Yeah, okay. Okay, thank you. Okay, when we say carbon footprint, as we have our footprint means हमारे पाँव के निशान. In the same way, when we say carbon footprint, it is a footprint of an individual or an organization in context of carbon content we are generating. How much CO2 I am adding as an individual or as an assistant professor or as a Amardev to the environment. How much CO2 we as an organization are adding CO2 to the environment. तो वो कार्बन फुटप्रिंट है, एक मैप है. जब कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं, इफ आई से टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं थापर यूनिवर्सिटी की, तो हम मेरे एक दोस्त है, ही इज रनिंग अ पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी इन पटियाला. तो वो हर डे को सेलिब्रेट करता है वहां पे. ही सेलिब्रेट्स ईच डे. वो अर्थ आवर एवरी ईयर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड ओजोन डिप्लीशन प्रोटेक्शन डे.
सो वो बहुत से डे सेलिब्रेट करता है। तो एक दिन उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया हमने कि हम 10 मिनट्स के लिए थापर यूनिवर्सिटी का हमने लाइट को टर्न ऑफ किया। तो थापर यूनिवर्सिटी में अराउंड 3500 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, 1500 अप्रोक्सीमेट एम्प्लॉइज लगाए, 5000 हम कंसिडर करें कि वहां पे स्टूडेंट्स आपका ऑन बोर्ड पीपल है जो एक कैंपस पे है 5000। तो उसमें जब हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद किया, what we calculated, within 10 minutes we were able to save units approximately to the tune of 8000 rupees of electricity. 8000 rupees of electricity for 10 minutes cut. It means in 1 hour we have 6 chunk of 10 minute each. Means 8 into 6 means 48,000. Means in 1 hour Thapar University having 5,000 people on board is consuming 50,000 of electricity approximately, and it means 24 hours in a day, 12 lakhs electricity bill in a day for a university with 5,000 people. 12 lakhs if I multiply by it by 30 for a month, it means 3 crore 60 lakhs in a month they are spending on the electricity. It means if we can design some systems, we can modify our habits, we can design our behavioral pattern. In that case, we will be able to save the electricity consumption by more than 15 to 20 lakhs per month, I am sure. And if we are able to do that, we can take out the salary of a professor or assistant, several assistant professor like me from that money, or we can spend that money on the good project work for the students. And in the same way, there is another opportunity also. You can get these kind of systems, solar based systems or intelligent systems, you can get it designed from your students also. You can give them projects. So for example, to make their any classroom, their conference room as automated or based on solar power. So this kind of, if you guide your students in those areas, it will be a real-time project also. It can be implemented in your university institution also, and it will be a win-win situation for both. So अब carbon trading पे मैं हल्की सी बात करूंगा. Carbon trading, if I say go to an organization, private institution, and I say कि you are polluting the environment, and if you modify your work practices, change your work practices, you will save environment. He will say, Amar, I am not considered about that. Most of the times I got this response. We are considered about business, we are making business. So profit is what matters to us. So they work for profit, some of the organization, but at the same time, some people are ready to go for saving the environment. But if I say to our institution, we will not allow you to work, their economy will suffer. For example, US. In the US, I take the example of say FedEx, Federal Express. There is a courier and services they provide, and they are having several fleets of aeroplanes, their own aeroplanes, their own vehicles. It means their footprint on the environment is very high. Carbon emissions is very high. But if the US says we will not allow FedEx to operate, it means a business opportunity will stop. If a business opportunity stops, the economy of a country will suffer. So they can't stop a business house from doing a business because the economy of a country is dependent on that. So they have designed such a good system, experts in this area. What they said, they have to generate an intrinsic motivation so that both the parties are equal, all the institutions are equally ready to reduce their carbon footprint. So what they did, they created a kind of quota system. They allocated certain points to each organization. Say there are two organizations, organization A like FedEx, मैंने जिसकी बात की, organization B, say it is a banking organization. It is not a that capital transport intensive organization. So दो organization है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यूएस ने और लॉज ने और अदर कंट्रीज ने डेवलप में, उन्होंने ये किया कि 1000 पॉइंट्स फिक्स कर दिए. 1000 पॉइंट तक दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पोल्यूशन जनरेट कर सकती हैं, इतने अलाउड पॉइंट्स हैं. बट इफ 1000 से अबव जाएंगे तो यू हैव टू पे हेवीली टैक्सेस, फाइन्स. दे प्लेस्ड अ हेवी फाइन ऑन देम. तो दे अलाउड इफ अ ऑर्गेनाइजेशन जिसके 1000 पॉइंट से एक्सीड करते हैं कार्बन फुटप्रिंट, दे कैन बाय द पॉइंट्स, एंड जिनके पॉइंट्स कम है
1000 से कम है, जैसे 600 पॉइंट है, दे कैन सेल द शॉर्टफॉल. फॉर एग्जाम्पल कंपनी है फेडेक्स, अगर 1000 पॉइंट अलाउड है तो 1300 पोल्यूट कर रहा है, 1300 जनरेट कर रहा है, तो फेडेक्स हैज टू बाय 300 पॉइंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन. And another company, banking organization, say it is generating 600, that organization can sell 400 points, say 300 to FedEx and 100 to other organization. So in this case, there was an implicit motivation for all the organization. For example, if I am the company owner, I am creating more pollution than 1000 point, I will say my teams, say my departments, to cut down your CO2 emissions, since I wish to buy less and less points. The more I reduce the energy consumption, it means the less points I have to buy. And in the same case, if I am heading an organization that is creating only 600 points, I will say to my departments, to my different workers, we have to save more energy points so that we can sell more and more points. If I reduce from 600 to 500, it means I can sell 100 more points. This is a basic equation theme behind carbon trading. So it is being followed like Sensex trading also. So ये मैंने ये थीम को चाहा था कि ये इंडिया में भी हम इसको देखेंगे किस लेवल तक है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस पॉइंट्स में. तो मैंने डॉक्टर संजीव चड्डा जी जो है उनको ये सेशन हमने असाइन किया है ऑन कार्बन फुटप्रिंट्स एंड कार्बन ट्रेडिंग. तो होप he will come out with a wonderful interaction on that and we will get a number of inputs from him on that. तो इसमें मैं when I was working as a assistant professor in NIT Jalandhar, National Institute of Technology Jalandhar, तो वहां पे मैंने certain acre of lands देखा था कि जो ईयर मार्क्ड था, जिसमें कि उन्होंने उस एरिया में सिर्फ ट्रीज प्लांट किए थे. एंड I came to know informally that area of land is under carbon trading arrangement with certain public sector unit of India. So there is a potential opportunity for all the institutions pan India कि अगर आपके पास ample empty spaces हैं तो आप उस जगह पे ट्री प्लांटेशन करें, और जो गवर्नमेंट की और प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेज हैं आप उनके साथ आप टाई अप में उस एरिया को कार्बन ट्रेडिंग अरेंजमेंट में रखने की कोशिश करें. उसमें दो चीजें हैं, आपको प्लांटेशन में भी है आपके एरिया में, और प्लांटेशन के साथ आपको मनी भी मिल रहा है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू विल डू दिस काइंड ऑफ गुड एक्टिविटीज, तो कंपनीज विल कम फॉर प्लेसमेंट्स आल्सो. वी टॉक ऑफ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन एंड वी से कि ये बहुत टफ है आजकल, इंडस्ट्रीज को जो चाहिए मैन पावर वो मिल नहीं रहा. क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आवर स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग more time on doing WhatsApp, doing chatting. They are not being used towards these sustainable practices. And हम टेक्निकल जब एजुकेशन दे रहे हैं तो हम कहते हैं कि कोई एनवायरमेंट रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की है, वो एक एनएसएस टीम की है. वी डू नॉट कंसिडर इट टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बीटेक, ऑल एमबीए, ऑल एमटेक, ऑल पीपल्स इन जर्नल. So it is responsibility for all of us. It is not a single department or single person's responsibility. Then greening. When we say greening, it refers to reducing energy consumption, maximizing energy usage efficiency, and whenever possible, opting for renewable energy sources. The use of components and consumables that are eco-friendly also plays a role over here. जब हम बात करते हैं ग्रीनिंग की तो ये एक प्रोसेस का नाम हो गया कि हम एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, एनर्जी यूजेज एफिशिएंसी को बढ़ाना है. ओके, सस्टेनेबल. When we refer to sustainable, it means it refers to business processes, values, our ethics, and social justice in addition to the green physical attributes of a product or property. तो हम जब ग्रीन की बात करते हैं, ग्रीन प्रोडक्ट, ग्रीन प्रॉपर्टी की, तो जब सस्टेनेबल की बात करते हैं तो इसमें सारा कुछ आ जाता है. हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स, हमारा सोशल जस्टिस, all things are covered in it. Now then we come to sustainability. Can anybody share what is sustainability or sustainable development? Can anybody share from any of the centers what is sustainable development? सर, जो प्रेजेंट की नीड्स है हमारी, वो इस तरीके से हमें एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको भी प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड हो सके. बहुत बढ़िया, परफेक्ट, थैंक यू. Sustainable, according to the World Commission on Environment and Development,
they defined sustainability as a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. तो हमें अपनी नीड्स को तो मीट करना ही है, बट एट द सेम टाइम हमने ऐसे रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के पास कुछ बचे ही ना. Then we come to sustainable design. It refers to the system design where the objective is to create, हम बात कर रहे हैं सिस्टम डिजाइन की, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट प्लेसेस, हमारी प्लेसेस भी ऐसी हो जो कि सस्टेनेबल हो, प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स भी ऐसे हो जो सस्टेनेबल हो, एंड सर्विसेज in a way that reduces the use of non-renewable sources and maximizes environmental impact and relates people with the natural environment. यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेना चाहूंगा. हम यूनिवर्सिटीज में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि whenever we go for a building a classroom or a institution building, तो हम क्या करते हैं, पहले डार्क रूम्स बना लेते हैं. फिर उन डार्क ऑडिटोरियम्स, डार्क रूम्स को लिट अप करने के लिए अंदर बहुत सी हैवी लैंप्स लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं. वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हम उसके लिए एसीज इंस्टॉल करते हैं. सो वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन दैट. व्हेन एसीज वी विल यूज, वी विल बी स्पेंडिंग फर्दर एनर्जी, मनी ऑन एनर्जी. Why can't we have eco-friendly designs for our classrooms? Why can't we have eco-friendly designs for our auditoriums? You can have black kind of inner decorum, inner walls. You can have pardas and curtains of those. You can use those so that whenever there is in winters, you can have direct sunlight. When there is not going to be a play, there is going to be a tech fest. There is going to be a cultural event. You can have it in the natural light. And when there is a like of seminar or a projector, you are needing it, you make it black. We all are making all black rooms. If it is a physics experiment on black body radiation, then I say you make that kind of room. But otherwise, it is not a rational decision to make those kind of rooms and infrastructure. And in the same way, at one point of time when my friends were working with Patni Computer System Noida, I visited over there to get my brother interviewed over there. So I was in waiting lounge. जब मैं वहाँ पे wait कर रहा था, but I was seeing when I was walking, so lights used to turn on. When I used to go to another area 10 meters apart, those lights used to automatically go into a low power state, turn off. So it means intelligent control, intelligent electrical control. So in that case, we should, अगर हमारे पास डार्क रूम्स बन ही गए हैं हमारे यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, तो हमें उस सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना है. अगर हो सके तो आप अपने बच्चों से उसको डेवलप करवाएं उन सिस्टम्स को. ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तो इट हैज 3 पिलर्स: पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट. इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेज हमें प्रॉफिट का तो ध्यान रखना है. वी आर इनटू अ बिजनेस, आई एम ओवर हियर, आई एम इनटू बिजनेस, I am doing some business activity. It means profit. Profit is the motive. It should be there. But at the same time, I have to take into account my people also. If what kind of activity I am doing, how it is going to impact the society, their health, their well-being, their surroundings. Then planet. How I am going to impact my planet. For example, हम आजकल कह रहे हैं vertical expansion. हम सभी चाहते हैं हम flats में रहें. तो जब मैं गुड़गांव में visit किया, I traveled through a metro. I found on one side of the that metro rail line there was digs, huge digs in the earth. Soil was taken out. On other side there were 14-15 storied buildings, 10 storied buildings. Per unit area of land is the same. We are making high-rise buildings. It means the pressure on the earth crust, same area of land we are putting is enormous. So it is automatically, if we are going for a development, this kind of development without a rational approach in one area, it is going to cause the pollution problem of your earthquakes and other such natural problems. The kind of disasters we have faced in Srinagar and the kind of disasters we have faced in past in Uttarakhand, that is a real example. It is before us. So we have to make our decisions rational. Energy efficiency, it refers to designing a system, a building, a data center or a network node that consume lesser energy in comparison to conventional approaches for the same or higher performance. So it is important to note that all data centers, subsystems, network subsystems
and building subsystem, for example, HVACs, lighting and so on, possesses the potential to contribute towards higher energy efficiency. तो हमारे सर्वर रूम्स हैं, हमें उनका टेम्परेचर कंट्रोल, हमें उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में करना है. ऐसा नहीं है अगर जरूरत एक एसी की है हम 3 एसी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है जरूरत 3 एसी की है हमने एक लगाया है, तो वो ओवरहीट करेगा. Corporate social responsibility. Can anybody share what is corporate social responsibility? Can anybody share? Any center? So the projects to be taken up by the corporate and all the institutions for the welfare of the society. Okay. Can you share some of the initiatives taken by I would say whole community, including entrepreneurs and government in this area, corporate social responsibility? Like Infosys and TCS are working very good in the field of education, to provide education to poor students and to uplift. Like ITC is also working on this in this field. Okay, Tata was the first group who initiated the CSR concept. Tata. Okay, Tata, ultimate. Thank you. I got a chance to attend one of the session of Rakesh Bharti Mittal ji from Airtel and Bhaskar Chatterjee, Director Indian Institute of Corporate Affairs at Indian School of Business, Mohali. So in that interaction, that theme was based on corporate social responsibility only. So what Rakesh Bharti Mittal ji were saying, he said, I am ready to pump money into the different society areas for doing social work, but I am not getting the returns not in terms of money. The money is not going in the right hands. I am giving the money, but it is not being used for the purpose it should have been used for. So it is creating a doubt on me. Why should I pay from my organization to the pockets of certain agents, intermediaries? But at the same time, Bhaskar Chatterjee was sharing the CSR developments, what the government has taken the initiatives. He came out with a wonderful thing in 2010. He said, I received a call from the cabinet secretary, union minister or something in cabinet. He said, minister said to me, hey, Bhaskar, can you tell me how many companies are operating in India? What is the list and number of the companies, big companies or medium-sized companies operating in India? So he said, I said to the minister, sir, nobody, I can't, sir, sorry, I do not have this data, and nobody in India can tell you the exact count, how many companies are operating in India. But he shared, I requested the minister, sir, if you give me a time of 1 year, 6 months to 1 year, I will give you details of at least government registered government or public sector undertakings. So उन्होंने जब धीरे धीरे डेवलप किया तो उसमें से ये कंक्लूजन निकला कि देयर आर 13 lakhs रजिस्टर्ड कंपनी. अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ दें, 13 से 14 लाख कंपनीज हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से 650 से 650 से 700 कंपनीज आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. एंड उसमें से उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये डिजाइन किया कि हर कंपनी को अपने प्रॉफिट्स का 2% जो है वो CSR एक्टिविटीज में लगाना होगा, 2%. फिर उन्होंने सभी से पूछा, सभी ऑडियंस से, कैन यू हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स अ पर्सन कैन हैंडल इन अ लाइफ? किसी ने कहा सर एट अ सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम. तो somebody said, sir, one project, only one. Some said 2, some said 3. He said, anybody beyond 3? Nobody agreed. He said, a person can handle only 3 projects at a time. So he said, I am asking the same question to you. Which company has the highest turnover in India? Can anybody share? Infosys, I think. Okay. Okay. There was a guess also, but at the time we got a response ONGC. ONGC का जो 2% है वो several hundred crores में है. It is in several hundred crores. I feel so more than 200 crores. Up to 600 करोड़ उन्होंने कहा था, मैं मिस कर रहा हूं, बट 200 करोड़ से ज्यादा था श्योरली. तो 2% जो प्रॉफिट का 2% है वो 200 करोड़ है, उससे ज्यादा था. तो अगर 200 करोड़ की बात करें, 2% अगर ओएनजीसी ने से मैं कंसीडर करता हूं, उन्होंने कहा है कि 2% मींस 200 करोड़ उन्होंने इंडिया में लगाना है पैन इंडिया.
but there are no good takers. We are not aware of those kind of initiatives. और उसके बाद क्या हुआ, जब ये इनिशिएटिव शुरू हुए तो पहले तो कंपनीज ने उन्होंने कहा क्वेश्चन किए व्हाई शुड वी डू, बट धीरे धीरे उन्होंने कहा हमको उनको बीच में लेके आए, एनरोल किया. तो सम ऑफ द पार्टिसिपेंट आस्क्ड क्वेश्चन, सर व्हाई यू चूज फॉर 2% ओनली, व्हाई नॉट 5% ऑफ प्रॉफिट, व्हाई नॉट 1% ऑफ प्रॉफिट. देन ही शेयर कि जब एक कंपनी ऑपरेट करती है मार्केट में तो उसके रेवेन्यूज चेंज होते हैं, उसकी बिजनेस पोजीशन चेंज होती है. तो उसके कारण टू ट्रैक कि व्हेन कंपनी, उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई थी, ए बी सी. कंपनीज इन ए कैटेगरी विल कंट्रीब्यूट दिस मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू CSR, बी some lower, C some lower. He said to track a company when it moves from B category to A to B is very tough on real time situation. So he said we took the average of that calculation we did, so it came out to be 2%. So we kept it to be 2%. So उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पॉलिटिशियंस ने उसको यूज करना शुरू कर दिया कि जैसे उनके पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स की एनजीओ है तो वो वर्क उनको देना शुरू कर दिया, अब वो पैसा उधर जाना शुरू हो गया. फिर अभी उन्होंने धीरे धीरे क्या चेंजेस लेके आए हैं, स्लोली एंड स्लोली दे सेड दैट कि फॉर डूइंग अ CSR एक्टिविटी द टीम विल बी constituted in the institution, in the organization, corporate, and the director of that team will be the independent director. He will not be the employee of the organization. He has to be an outsider. And in the same way, the work you have given to which NGO, the details of that NGO and that work has to be displayed on the website, and it has to be a mandatory part of the annual report. So उन्होंने हमने पूछा कई पार्टिसिपेंट ने कि अगर फिर भी लोग मिल गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मिल गया, तो उन्होंने कहा कि अगर तो करप्शन लोअर से अपर एंड तक सभी करप्ट होंगे तो देयर इज अ नो वे आउट, एनीबॉडी कैन सेव अस. He said we are creating a kind of framework where all people assume their accountability. For example, he says when a company has to display it on website, it means counter NGOs will be seeing the website. अगर अमरदेव की एनजीओ को वर्क मिला है तो देयर इज अनदर एनजीओ वर्किंग इन द एरिया ऑफ जलंधर, ही विल सी कि इसको फंड कहां से आ रहे हैं, टाटा से आ रहे हैं, वो टाटा की वेबसाइट देखेगा, फिर देखेगा टाटा के किसी एम्प्लॉय का रिलेशन तो नहीं है अमरदेव के साथ. इट मीन्स वो इन्होंने आपको डाल दिया कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में. सेकंड, सोशल एक्टिविस्ट. सोशल एक्टिविस्ट विल सी हु एंड हाउ दे आर स्पेंडिंग द मनी. थर्ड, if not social activist, then your company or higher authority can see. They can also see which kind of work has been assigned to which person. So in that case, Indian Institute of Corporate Affairs has been created a Speaker on करो. Speaker on. Okay. Live लाइव उसमें और सेंड करो. आप भी लिख दो. सेम है. अच्छा टेक्स्ट है. हाँ. क्लिक टू ओपन ग्रुप डोर. तो क्या हुआ? बाद में
10 से भी कम है। भाई जो एमपी में हुआ था ना वही हाल है भाई। ये तो उधर फासला है। ट्रेन में थी भी Okay, sorry, technical problem. All centers are with us, Harjot? Okay, okay. Shall I start? Okay, okay. Thank you. Welcome back after a small break or technical snag. Okay. I was sharing about CSR. I was saying that when I shared this theme with a college in Chandigarh University professor, assistant professor, young professor over there in electrical department, they had got a fund from a certain oil-based company, and they are going to J&K within next month or in next 2 months to do good social work in Jammu Kashmir, and they have got the fund from a corporate house and educational institutions. If they can get it, I am sure you can also get it. And I will try in future in next 1 year कि I conduct a one fully dedicated training program on corporate social responsibility also, so that I may be able to invite corporates over here, so that the benefit how to go about tying up with those corporates can be taken up. I will give an attempt. It is not a promise, but I will give an attempt from my side. Okay. Then corporate social responsibility, a formal definition we will cover as put by Hayat et al. In 2009. CSR refers to a company's performance on a range of social and environmental issues over time. From a positivist perspective, and Scherer and Plazo also observes power gains between the firm and stakeholder resulting to what is referred to as CSR. Campbell जो है उन्होंने कहा है CSR are actions taken by a firm that are intended to further social welfare beyond the direct economic, technical and legal interest of the firm. तो जो आप CSR है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कहे कि मैं अपने एम्प्लॉइज को ऑर्गेनिक फूड देती हूं, तो दैट इज नॉट CSR. That is your prime duty to give a good food in hostel to students, in hostels to teachers. ये मिस होता है. मैंने जिंदल स्टील्स में विजिट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप CSR में क्या कर रहे हैं, कैसे टाई अप कर रहे हैं हिसार में, जो फर्स्ट प्लान था जिंदल्स का. तो वहां पे पर्सन ने बताया कि हम हॉस्पिटल है हमारा बेडेड. तो मैंने कहा क्या वो हॉस्पिटल फ्री है? दे सेड नहीं, फ्री नहीं है, वो पेड है. तो आई सेड टू देम इट इज नॉट अ CSR. फॉर एग्जाम्पल Bharti, your Bhaskar Chatterjee sir, he said at one point of time some rural electrification division के चेयरमैन थे इंडिया के. उन्होंने कहा कि मैं इंडिया के लास्ट स्टेट के लास्ट विलेज के लास्ट घर के लास्ट कोने तक बिजली पहुंचाता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता हूँ. I make electricity reach to each corner of the country. So I am doing CSR. There is no need for separate CSR. So all officers in that meeting, he said to him, that is being you are paid for. That is your basic duty to make electricity reach to each corner of the country. That is not CSR. CSR is when you do something away from your routine company's operation. अगर मैं एजुकेशन कर रहा हूं तो एजुकेशन ही मैं रूरल को कर देता हूं तो मैं कहता हूं मैं CSR कर रहा हूं? नहीं, that is not CSR. It should be apart from this basic this training. Okay, eco goals, जैसे हमने बात किया further emphasizing on IT मोला. ये एलन आपके आई एम सेइंग सॉरी एलन, इट इज अ मौला, ए मौला हुए हैं. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. इन्होंने ग्रीन IT टर्म को कॉइन किया था इन 2007 इन हिज रिसर्च, एंड उनके एरिया में उसको मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ इन अडॉप्शन. Hope so I may get find time to complete my PhD, but otherwise I will be sharing these things with all the persons in country. Okay, eco goals. There are 3 goals to it. One is eco efficiency. It is a delivery of competitively priced goods and services that satisfy human needs and bring quality of life while progressively reducing ecological impacts and resource intensity throughout life cycle to a level at least in line with the Earth's carrying capacity. मीन्स हमें गुड्स जो कि कम्पिटिटिवली प्राइस है, ना कि बहुत लो प्राइस. अगर लो प्राइस के लिए जाएंगे तो उनका एनर्जी एफिशिएंसी लो होगा, एनर्जी कंजम्पशन हाई होगा. तो हमें कम्पिटिटिवली प्राइस करना है जिसमें पैसा भी ठीक ठीक मिले और क्वालिटी भी हम अच्छी दें जिसमें एनर्जी भी कम
कंज्यूम हो। सर्विसेज ऐसी डिजाइन करनी है जो कि हमारे ह्यूमन नीड्स को और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को सेटिस्फाई करे, अच्छा मेंटेन करे। इको इक्विटी, it refers to the equity between peoples and generation and in particular the equal rights of all peoples to environmental resources। तो हम सबका एक तरीके का हक है हमारे रिसोर्सेज पे, it should not be taken off। Then eco-effectiveness. Eco-effectiveness means working on the right things, on the right products and services and systems instead of making the wrong things less bad। हम पहले गलती करके उसको फिर ठीक करते हैं। It should not be कि we first commit a mistake, then we go for another business opportunity correcting that mistake। It should be in line at the right time, at the right moment, right systems and right products we should work on। Can anybody share a difference between efficiency and effectiveness? What is the difference between efficiency and effectiveness? Any thinker? Difference between efficiency and effectiveness. End result. Any thinker? The talk and context of machines. Efficiency is something output part to the input part. Okay, thank you. Okay, when we when generally I interact with all the participants and students, I generally discuss at least one time on efficiency and effectiveness. Efficiency is output upon input. It means optimum utilization of resources. E is equal to O upon I. It is a quantitative term. And अगर E की वैल्यू को बढ़ाना है, either we increase the output keeping the input same, or we decrease the input for getting the same level of output। E बढ़ जाएगा। और जब क्वांटिटेटिव टर्म है, statistical techniques come into play, quality principles, your all quality statistical process control techniques। What is effectiveness? Then can anybody share what is effectiveness? What is effectiveness? We are getting you, sir. Effectiveness. Okay. Effectiveness is the impact of our activities. Can anybody give an example where we may be efficient but we may not be effective? Any example? Where we may be efficient but we are not effective. Optimal utilization. Any example? So like, We are getting you, ma'am. we are polluting the environment. That is not effectiveness, but we are utilizing the resources. Okay. I will come to I will precise it. For example, सभी के पास बाइक्स हैं, सभी के पास हमारे पास एक्टिवाज हैं, तो generally we receive a call from a person over in the service center. The service of your bike or activa has to be done. So what you do? आप हमारे पास आए. For example, there are two persons and a target of 200 calls is assigned to both in a day. So there may be a two persons. One person would be making 300 calls and another person would be able to make 100 calls. It means the person who is making 100 calls, his efficiency is 50%, and the person who is making 400 calls, his efficiency is 200%. And if you appraise his performance based on this factor only, it means 200% should be given promotion and salary incentive. But there may be a chance the person who has made 100 calls, out of those 100, 75 people turn up for doing their servicing of the vehicle. And out of the person who have made 400 calls, only 50 people come. So who is more effective? The person who may have made the less call, but the turnover up rate was more. मीन्स उसने थोड़ा सा अपना बात किया
थोड़ा सा टाइम पेशेंस से स्पेंड किया, कस्टमर को कंफर्ट जोन में लेके आया, उसको बताया, फिर उसको कन्विंस किया एंड ही केम। दैट्स इट। सो ये हम यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं। व्हाट वी डू, वी गो फॉर एफिशिएंसी but we do not go for effectiveness in our education also, in our IT initiatives also. For example, there was a person, one of the person from I would say water department. He said there are around 11,700 something villages in Punjab, and unme se only 300 villages are left. We have installed taps in all the villages. ठीक, तो we asked him what kind of difficulties you faced. He shared with us normally in villages, some of the villages people do not allow us to enter. They say हमें टूटी नहीं चाहिए, उनको लगता था कि टैप्स आएंगी और हमें बिल पे करना पड़ेगा। ठीक, so we asked what was your solution proposed. He said we used to make a village where the sarpanch, head of the village, was a ex-serviceman retired from a army or defense services. We used to make that village as a model village. Then we used to implement that thing to the surrounding villages, convince the surrounding villages. But my question was, do we waste more water in cities or in villages? Do we waste more water in cities or villages? We waste more water. But I am of the opposite view. Earlier, now we waste more water in villages because उसमें सीवेज सिस्टम और ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है. बट अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि हमारे जिस पॉन्ड में पानी इकट्ठा हुआ उसी में हमारे कपड़े धुल जाते थे, उसी में हमारे केटल्स को बात करवा दिया जाता था और उसी में पॉन्ड में से पानी निकाल के पंप करके खेतों को दे दिया जाता था, नहर से, कैनल से और योर रिवर नियर बाय. बट अब क्या हो रहा है, सिटीज में हम देखें तो हमने अपने व्हीकल को धोना है. वी हैव टू क्लीन अवर व्हीकल, कार. तो ऑल ऑफ आवर वी आर यूजिंग टैप वाटर, ड्रिंकेबल वाटर टू वॉश दैट कार. बट चंडीगढ़ ने इस इफेक्ट में एक स्टेप लिया है कि अगर आप घर का पानी जो नल का यूज करोगे गाड़ी धोने में और अगर आपका वो पकड़ा गया तो यू विल बी फाइंड. देयर इज अ चालान फॉर दैट एंड इट विल बी इशूड एट योर होम ओनली. सो आई विश टू मेक अ पॉइंट इज he was efficient. He brought so many villages in the tap control, but he was efficient but not effective. If he would have done it कि बठिंडा में कैंसर ज्यादा है, वाटर टेबल पोल्यूटेड है, तो हमें एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाना है गांव में और वो लगा के फिल्टर्ड वाटर को सप्लाई करने के लिए टैप्स लगानी है घर में, देन मैं उसको कंसिडर करता कि दैट वाज अ बोथ अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिसीजन. बट covering more number of villages under this scenario but providing them the polluted water only, it is an efficient decision but it is not an effective decision. In the same case, buying IT infrastructure, IT products for your organization, for your institution is a good thing. It is an efficient decision, having number of laptops, number of computers for each student, tablets, but it may not be an effective decision, it may not be a wise decision. So generally it is being said doing things right, चीजों को सही करना is efficiency, doing right things is effectiveness. Okay, environment. The environment can be seen as an important part of sustainability. It has three pillars. हमने बात किया था, people, planet, profit. Stakeholders में हम सब हैं, government है, consumers है, suppliers हैं हमारे. Okay, greenwashing. There is another term in literature called greenwashing. Greenwashing is a term derived from whitewashing. The term whitewashing is defined as a coordinated attempt to hide unpleasant facts, especially in a political context. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ गलत कर रही है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, एक नाम आया था अभी एक कंपनी का, हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लोगों की हेल्थ को हिट करता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का ये कि वो अच्छी है प्रोडक्ट, कंपनी अच्छी है, तो इट मीन्स वी आर डूइंग व्हाइट वॉशिंग. जब इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में एक कंपनी पोल्यूशन जनरेट कर रही है, एयर और वाटर और समथिंग, और उसको फिर कहती है कि नहीं हम इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज रेफर टू एज ग्रीन वॉशिंग. ओके, एंड देन द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग इज द फेनोमेना ऑफ सोशली एंड environmentally destructive corporations attempting to preserve and expand their markets by posing as friends of the environment and leaders in the struggle to eradicate poverty. वो है तो एनवायरमेंट को तो खराब कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि हम
फ्रेंड्स है एनवायरनमेंट के, और हम पॉवर्टी को रिमूव करना चाह रहे हैं. That is referred to as greenwashing. They are doing greenwashing. Now we come to the definition of green IT. It refers to the environment conscious and cost effective use of power and production in technology by centering around saving energy through hardware, software, services and even habits. तो इसमें ग्रीन आईटी की बात करें, कल जो पार्ट डिस्कस किया होगा आपके साथ मंजूर जी ने, जो कल मॉर्निंग में एक स्टूडेंट और एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी करेंगे नेलेट के. इट इज हार्डवेयर. दे विल बी डीलिंग विद द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर मीन्स doing choosing the equipment, which equipment you to buy. Software means using virtualization and other tools, print optimization, network printing, and services. For example, how do we use our communication network? For example, if there is a class at one time, auditorium, you are together, you are using internet. It means you have to turn on laptop. You will type a message. Why can't you use the WhatsApp communication system for doing official work? क्योंकि हम सब डरते हैं कि अगर WhatsApp पे रिस्पॉन्ड करेंगे तो डायरेक्टर और सीनियर प्रोफेसर हमें वर्क और असाइन कर देंगे. फिर विल कम टू नो. जैसे ग्रुप बनता है, अगर डायरेक्टर बीच में है तो हम लोग अपने आप को निकाल देते हैं. बट वी शुड कीप अवर वर्क लाइफ बैलेंस. इंडियन सिनेरियो में एक और वीक पॉइंट है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस नहीं करते. तो अगर हम अपना लिमिटेशंस को भी मेंटेन रखें कि किस टाइम पे बात करना है, किस टाइम पे वर्क असाइन करना है, और एट द सेम टाइम वी यूज दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क, I feel so lot of our problems regarding energy and IT wastage will be solved. Okay. Then services and के बाद even habits. उसके बाद अपनी habits. क्या मैं अपनी सीट से जाता हूँ, अपना लैपटॉप कंप्यूटर वैसे ही ऑन छोड़ देता हूँ, और do we उस चीज को मैं टर्न ऑफ हाइबरनेट और स्लीप मोड में डालता हूँ. Okay, we will skip this. Then we come to green IT and an organization's ability. Is an organization's ability, another definition of green IT, to systematically apply environmental sustainability criteria such as pollution prevention, product stewardship, use of clean technologies to the design. अब हम बात आ गए हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे. To the design, production, sources, use and disposal of the IT technical infrastructure as well as within the human and managerial components of the IT infrastructure. ओके. एलन मोला उन्होंने जो पर्सपेक्टिव्स दिए हैं ग्रीन आईटी के, देयर आर फर्स्ट 4 पर्सपेक्टिव्स टू इट. वन इज ग्रीन आईटी सोर्सिंग पर्सपेक्टिव. फ्रॉम अ सोर्सिंग पर्सपेक्टिव, ग्रीन आईटी इंप्लॉइज द प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली प्रेफरेबल आईटी परचेजिंग. तो सोर्सिंग पर्सपेक्टिव की जब बात करते हैं, इट इज हाउ मच एनवायरमेंटल कॉन्शियस वी आर when we are making purchase decisions for our institution pertaining to IT peripherals. Then is green IT operations perspective. From an operations perspective, green IT implies improving energy efficiency in powering and cooling corporate IT assets and reducing the IT induced greenhouse gas emissions. So how our planning for data center operation is, it comes under green IT operations. Then green IT services. From a services perspective, green IT refers to the role of IT in supporting a business overall sustainability initiatives. Adopting a green IT from a services perspective therefore include adoption of analytical tools for green supply chain management, environmental management and carbon footprint analysis. जैसे हमने बात की है ग्रीन कार्बन फुटप्रिंट एनालिसिस की एंड एनर्जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, वो सारे ग्रीन आईटी सर्विसेज में आएंगे. Then is green IT end of IT life perspective. Green IT from an end of IT life perspective, it refers to the practices in reusing, recycling and disposing IT hardware and consumables in an environmentally responsible manner, and from an end of IT life perspective. Okay, now quickly we will go through the list of the practices under each perspective I have compiled. Summary of practices constituting green IT sourcing perspective. Green supplier selection, कि क्या हम जब परचेज कर रहे हैं आईटी, तो हम जो सप्लायर है हम देखते हैं कि उनके पास एनर्जी स्टार रेटिंग है, उनके पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी ईपीए का सर्टिफिकेट है कोई. मोर एनर्जी एफिशिएंट एनवायरमेंटल फ्रेंडली इक्विपमेंट सिलेक्शन, जैसे कि हम कई बार लैपटॉप को प्रेफर करते हैं बाय करना डेस्कटॉप को, तो लैपटॉप
जो है, हम बात करते हैं डेस्कटॉप को प्रेफर करते हैं बाय करना, बट डेस्कटॉप कंज्यूम मोर एनर्जी देन लैपटॉप व्हाइल पावरिंग अप एंड टर्निंग ऑफ. So wherever possible, we should go for purchasing laptops. But in the same case, we have to remember that for a teacher, how much hardware is needed. What, for example, for a normal teaching operation, if I have to teach in a class, 100 GB hard disk is sufficient. I feel so. But what happens when we purchase a laptop or desktop? We go for 500 GB or 4 GB RAM. When we go for 500 GB, it means more cycles, processor will take more number of cycles per second. Speed will slow down when there is more data stored in your hard disk. So more energy will be consumed. So that is not the optimum utilization. अगर आपने देखना है कि अगर आप मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स स्टडीज और नॉर्मल डिग्री के लिए कर रहे हैं तो 100-150 GB is enough. Make purchase a laptop which has 100 GB hard disk for your teachers, for your students. If it is a say, if it is going to be a high-end technical software, computer science, you wish to install Corel Draw, other softwares, then you may go for a 500 GB or 4 GB RAM. So you have to make your choice while purchasing. Consideration to recycling and upgradation. Normally what happens कि जब हमारे कंप्यूटर्स पुराने हो गए तो एवरी वन ऑफ अस विश टू हैव अ गुड स्क्रीन ऑन आवर वन ऑफ द सेंटर्स माइक इज ऑन, प्लीज म्यूट. ओके, थैंक यू. व्हेन हमें मेरे को अच्छा एक स्क्रीन चाहिए टेबल पे, तो इन दैट रेस आई आस्क टू माय हेड, टू माय डायरेक्टर, गिव मी अ न्यू कंप्यूटर. There may be a chance if you upgrade your RAM of your previous computer, it may work well, but we do not go for it. And उसका रिजल्ट क्या होता है, मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, व्हेन आई विजिट ओवर देयर, कि उनके कॉरिडोर में सारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा होगा, क्योंकि उसको वो डिस्पोज ऑफ करने का प्रोसीजर बहुत लंबा है, तो वो कर ही नहीं पाते. सो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि क्या आपने वेंडर के साथ take back arrangements hai, preference to vendors with leasing or take back arrangements. For example, if you buy 50 laptops or desktop from HCL, so you can have an agreement with HCL कि after 2 years you have to change or update the same laptops in working condition, otherwise you can charge money. Annual maintenance contracts you must be having nowadays. Then laptops as an alternative to desktop, preference to use of green energy. If you can use the solar power in your campuses, prefers to vendors with leasing or take back arrangement. Give it to green labeling certification obtained by the vendors before making IT purchases. Now we come to services practice, summary of practices constituting green IT operations perspective. तो इसमें सर्वर वर्चुअलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन, जिसमें आप सर्वर क्लाइंट मॉड्यूल में बात कर सकते हैं, थिन क्लाइंट मॉड्यूल में, तो वो अभी मैं छोड़ रहा हूं आदित्य के लिए और सरवन जी के लिए कवर करने के लिए. आदित्य थ्योरी डील करेगा, सरवन जी आपको प्रैक्टिकली वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करना सिखाएंगे. सम ऑफ द सेंटर्स मे बी अवेयर, सम ऑफ द सेंटर्स इट मे बी न्यू, टुमारो दे विल डू इट. देन इक्विपमेंट एंड लाइट टर्निंग ऑफ पॉलिसीज फॉर नॉट इन यूज इक्विपमेंट. अगर आपकी लाइब्रेरी है, आपकी सेंट्रलाइज कंप्यूटर लैब है, तो आप उसके साथ एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रख सकते हैं. व्हेन यू विल मूव आउट फ्रॉम वन कंट्रोल, all lights goes off. Print optimization and avoidance, अभी बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया था किसी ने कि आपका प्रिंट ऑप्टिमाइजेशन में नेटवर्क प्रिंटिंग, तो दैट आई सॉ इन NISCARE, National Institute of Science, Communication and Information Resources. When I visited over there, what they had done, for 15 computers they had a single printer and that printer was placed at a center place. अगर मान लो हम हर एम्प्लॉय इंडिविजुअल प्रिंटर लेता है तो उसकी टेंडेंसी रहेगा नॉर्मली कि वो हर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अमरदेव सिटिंग एट अ सीट, अगर मैं कोई काम इंटरनेट लैपटॉप में भी कर सकता हूं, मैं सोचूंगा उसका ड्राफ्ट प्रिंट ले लूं, 5 प्रिंट ले लूंगा, तो इट विल वेस्ट, प्रिंटर विल कंज्यूम एनर्जी एंड अगेन आई विल वेस्ट पेपर एंड इंक ऑल्सो. इंक इज ऑल्सो फ्रॉम एनवायरमेंटल इंग्रेडिएंट्स, वी वेस्ट इंक ऑल्सो. बट अगर सेंट्रलाइज प्रिंटिंग करते हैं तो हमें एक चीज को ध्यान में रखना है, तो हमें कई बार पर्सनल यूज भी होता है. एक पर्सन ने अपना घर का ऑनलाइन बिल का रिसिप्ट निकालना है या ट्रैवलिंग के लिए ई टिकट निकालना है, तो वी शुड नॉट बी सो टाइट और फजी इन अवर अप्रोच दैट कि हम अपने असिस्टेंट प्रोफेसर और डाउन को हम ऐसा करें, उनको कहें कि नहीं, यू कांट डू दैट, इट इज योर पर्सनल. जस्ट in a decorum way, place a printer at a centralized place, allow the people to use as they wish to use. It will save your
it will have a good relation also. And instead of buying 5 different printers for 5 different people, you have to buy one printer, and it will save paper also, it will save your energy also. Then right sizing your core IT infrastructure and supporting system, वो है आपने जितना जरूरत है उतना ही खरीदे. For example, if there is in an organization there are 500 students, so if you go for establishing routers and all network nodes for internet access to 500 people, or a physical backbone line using a LAN wire, that is not a wise decision, because you have to calculate how many students at a time are going to access the internet at particular time. For example, in morning it may be less because students will be in classrooms, and evening they will be in hostels, the load will be more. So in hostels you will be needing more connectivity, more number of Wi-Fi routers. In your classrooms you may be needing less, so you have to purchase accordingly. And in that case you can use DHCP server, Dynamic Host Control Protocol, जिसमें कि वो आप यूजर्स को प्रोविजन कर सकते हैं. जैसे 100 यूजर्स आपने प्रोविजन कर दिए, अगर 201 लोग हैं तो 100 विल बी लॉग इन, जैसे ही 10 लोग लॉग आउट करेंगे दूसरे 10 यूजर्स को वो लॉग इन अवेलेबल हो जाएंगे, आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हो जाएंगे. तो DHCP सर्वर यू कैन यूज इन योर इंटरनेट प्रोविजनिंग. देन योर स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, हम ऐसा कर सकते हैं. Maxipa, when I was working with Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration, they were having 10 GB hard disk at each end, and वहां से हर वीक में एक सेंट्रलाइज पर्सन यूज टू कम एंड वो डाटा का बैकअप लेके हमें पर्सनल दे देता था, पेन ड्राइव में आप रख लो, और बाकी को रिमूव कर देता था. 10 GB वाज डूइंग वेल. एंड कोई सेंट्रलाइज डाटा था वो उसका बैकअप ले जाके एक सेंट्रलाइज स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर देता था. ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेनेंस, उसकी बात कर ली है हमने. डिजाइन इनोवेशंस इनकॉर्पोरेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन, इट रेफर्स टू द your architectural design of your data centers. More efficient power supplies and hardware, batteries and energy star rated you have to purchase. Data deduplication, you have to avoid data deduplication. अगर आप emails में आपके multiple emails हैं, आपके 13,000 emails है, 14,000 है, 4 email ID हैं, तो it means it is being stored somewhere in US or another country, so it is also you are consuming energy. तो आपने emails को आपने साथ के साथ उसको देखना है, और जो अननेसेसरी है, अननीडेड है, उनको डिलीट करना है. डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन वो करके दिखाएंगे आपको. लिक्विड वाटर कूलिंग अरेंजमेंट्स फॉर आईटी इक्विपमेंट, जहां पे कि अगर केमिकल्स की बजाय आप लिक्विड वाटर कूलिंग अरेंजमेंट कर पाए, उस चीज को एक्सप्लोर करना है. सम मोर टेक्नोलॉजी सच एज स्पैम फिल्टरिंग, आजकल यूज हो रहा है. क्लाउड कंप्यूटिंग, हीट पंप, सोलर एनर्जी, कंबाइंड हीट पावर को जनरेशन प्लांट्स कैन बी देयर. देन हम आते हैं to the summary of practices contributing green IT services perspective. उसमें thin client provisioning है, power efficiency monitoring, तो उसके लिए power management, power efficiency monitoring करने के लिए हमारे पास काफी open source free power management tools, software features हैं. आदित्य उसको लिस्ट कर देगा. टाइम बेस्ड यूजर्स पॉलिसीज, हम फिक्स कर दें कि लाइब्रेरी में अगर 4 घंटे लाइब्रेरी ओपन है, उसमें 1 घंटा ये है, इसमें इंटरनेट विल बी वर्किंग, सो दैट स्टूडेंट कैन यूज कम ड्यूरिंग दोज आवर्स and use the internet. Powering down of idle systems, जो systems free हैं उनको turn off किया जाए. IT used to monitor and reduce carbon footprint, अगर आप ऐसा कोई मैनेजमेंट सिस्टम बना पाए बहुत अच्छा है. Retiring old inefficient equipments, अगर पुराने इक्विपमेंट हो चुके हैं जो यूजेबल नहीं है, एनर्जी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उनको आपको सेल ऑफ करें. गो ग्रीन पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स फॉर एम्प्लॉइज, अगर मान लो कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर पुराना हो गया है, तो आप एक ये काम भी कर सकते हैं, आप उसको किसी ऑर्फनेज में दे आए, आप किसी ओल्ड एज होम में दे आए, ताकि कम से कम वहां पे जो लोग हैं रह रहे हैं वो उसमें थोड़ा बहुत सॉन्ग सुन पाए, उस पर थोड़े बहुत गेम खेल पाए. चाइल्ड लेबर स्कूल्स हैं, वहां पे एक कंप्यूटर इंस्टॉल कराएं ताकि वो बच्चे वहां पे वर्क कर पाए, थोड़ा सा कंप्यूटर एक्सेस हो पाए. अगर आपके पास टाइम हो तो अपने बच्चों का एक सर्कुलर निकाल के ड्यूटीज लगा के हर वीक में वो 1-2 घंटे उन बच्चों के साथ स्पेंड करके आए, उनको टेक्नोलॉजी का अपडेशन सिखाएं. ओके, समरी ऑफ प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटिंग ग्रीन आईटी एंड ऑफ आईटी लाइफ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव. यहाँ पे 4-5 चीजें हैं. एनवायरमेंटली फ्रेंडली डिस्पोजल प्रोविजंस, जब आपने उसको खत्म डिस्कार्ड करना है तो यू शुड डू इट इन रिस्पॉन्सिबल वे. रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, reusing for waste reduction and refurbishment initiatives और transfer donation of old equipment as I have discussed. इसमें एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि जैसे नोकिया है,
नोकिया ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव निकाला है कि उन्होंने क्या किया है कि हर अपने सर्विस सेंटर्स में वेस्ट बिन लगा दिए हैं कि अगर आपका ओल्ड मोबाइल है, अगर आपको पता नहीं है उसको थ्रो कैसे करना है कहां पे, तो आप वहां पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको ये कहूंगा कि हम सेफ हैं, गुड हेल्थ में हैं, बिकॉज देयर आर मेनी स्मॉल किड्स, आपने देखे होंगे रैग पिकर्स, जो कूड़ा करकट बिनते हैं, वो कूड़ा उठाते हैं, इसलिए हमारी विसिनिटी साफ रहती है। बट डोंट थ्रो योर शार्प एज्ड equipments and electronic components in that waste, because if you throw them over there, they may be picking up those materials, and there are chances leaked batteries and other harmful equipments will make their skin burn and make their health problems. So as a humble good citizen, I request you, don't throw your batteries and other things in your normal bins, home bins. Throw it at, if you wish to do it, throw it at service centers where e-waste bins are there. Second thing you can do is, there is a very good ecopreneurial opportunity in that also. You can have a act as a e-waste collector in your state, in your area. ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए भी टाई अप कर रही है कि यू बिकम अ ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर फॉर अ कंपनी, एंड वो आप अपने बच्चों के साथ एक सेंटर बना सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में कि आपने आसपास के 10 विलेजेस के पुराने मोबाइल्स वगैरह इकट्ठे किए जो वेस्ट है, और उनको उन कंपनी को बैक भेज दे, तो उस केस में आपको मनी भी मिलेगा, फिर अगेन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन बढ़ रहा है, और आपके बच्चों का प्लेसमेंट के लिए डोर्स ओपन होंगे। तो इसमें वेल विन विन सिचुएशन फॉर ऑल है। क्विकली मैं अभी, टाइम इज, आई डू नॉट विश टू टेक मच मोर टाइम, तो अभी मैं चारों फेजेस पे आता हूँ ग्रीन आईटी पोटेंशियल को लिंक करने के लिए आईटी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। तो द डेवलपमेंट फेज, इट एम्ब्रेसेस द यूजिंग ग्रीन मटेरियल and seeking energy efficiency consumption to design environmentally friendly systems and computers। तो इस केस में आपका जो कुछ मटेरियल है हार्मफुल, जैसे लेड, क्रोमियम, ब्रोमाइड्स हैं, कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, तो उनको रिड्यूस करना, और क्या और मटेरियल यूज कर सकते हैं उनकी केसिंग बनाने में, कैबिनेट्स बनाने में, उस पर वर्क करना, उसमें रिसर्च डेवलपमेंट में कर सकते हैं आपके बच्चे। द प्रोडक्शन फेज, इट फोकसेस ऑन एनर्जी सेविंग टू रियलाइज कॉस्ट सेविंग एंड द रिडक्शन ऑफ कार्बन एमिशंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो इसमें सारा आपका आ गया प्रोडक्शन प्लांट पे जो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज के बारे में बात आ गया। एंड देन यूजर्स फेज, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ये यूजर्स फेज आता है अपने ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ पे, इट्स एम्प्लॉइज बिहेवियर, इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। To implement a green IT strategy, the management needs to draw up a new process and implement new standard, not only in terms of IT infrastructure but also in terms of individual uses। इसमें बहुत सी और चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा हूं, बट अभी टाइम शॉर्ट है तो वो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। यू कैन, अगर कोई इंस्टीट्यूशन करना चाहेगा, दे कैन कम इन कंटेक्ट विद मी थ्रू माय मोबाइल फोन। ओके, डिस्पोजल फेज, in that phase it is the most crucial phase as it is primarily depends on the government's involvement in the enforcement of regulations and motivating the companies to invest in products which can have a second life। तो इस केस में आप गवर्नमेंट के साथ, अभी मेरा जो दोस्त है पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी, उसने एक ई वेस्ट कलेक्शन, ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बन गया था पंजाब में, बट उसका थोड़ा सा पार्टनर्स के साथ कुछ मिसमैच हुआ, तो ही हैज टेकन अ स्टेप बैक, but I am happy to share he has taken step in this regard। And then viewing each phase of IT product life cycle from a green lens। अब इसमें जो चारों phases की बात की है, उसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है, बच्चे जहाँ रिसर्चर्स क्या फोकस कर सकते हैं। IT development phase में the key concern for greening the IT development phase is the removal of toxins from the products। Here the relevant standard that you have to study is restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment directives। ROHS directives are there, तो आपने उनको देखना है। आपने बच्चों को जब भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपके बच्चों को ROHS directives पता होने चाहिए, उनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ताकि कल को वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो दे शुड बी अवेयर कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस दे हैव टू फॉलो while doing a electronic project। Then there is a production phase। One of the alternatives for greening the IT production involves the use of green power such as thermal, solar, photovoltaic, wind, hydro or renewable and clean coal technologies। Here you can see for environment protection agencies there,
their green power products are available. There are 3 types: renewable electricity, renewable energy certificates, and on-site renewable generation. The one thing can be they will generate power at their end and they can distribute, supply it to you. Second can be they can certify, they can come to your organization, set up a renewable energy based power plant at your institution, they will charge money and they will go back. That is another option. Then IT users phase, हमने इसमें काफी बात कर ली है, techniques, practices, policies for greening the IT users phase. Here it is selecting green supplier, वो जो sources, operation, services perspective की बात की है वो सारा इसमें आता है. Selecting the green supplier, laptops as alternatives to desktop, server virtualization, print optimization and avoidance, equipment and light timing on policies, turning off policies, techniques for cloud computing, teleconferencing, video conferencing and all others. Here the relevant standards are, regulations are that needs to be studied. Code of conduct on data centers energy efficiency is there. The Green Grid Consortium is there, you can visit online. Electronic Product Environment Assessment Tool is there, EPA, a product registry in United States, जो कि certify करती है कि कौन सी product environmental friendly है. तो EPA is there. And IT, end of IT life cycle disposal phase की बात करें, here the reduction of computer resources both in numbers and amount necessary to accomplish the same task means reusing for waste reduction and increasing the product lifespan, responsible recycling and transfer or derivation of old equipment. Here the relevant standard to be studied is Waste Electrical and Electronic Equipment Directive. With this, I thank you very much for listening so patiently, and now